Good morning, students. In the last lecture, we were discussing about the various techniques of capital budgeting, and we have divided these techniques into two parts: non-discounting and discounting techniques. And in the previous lecture, we have discussed one technique of non-discounting, that was payback period, in which we have seen that the company was able to realize that in what period, in how much time the investment would be recovered. That means, with the help of payback period, we are able to know how much risk is going to exist in the market for the company. कि कंपनी को कब तक रिस्क उठाना है, कितने समय तक रिस्क उठाना है, और जब उसका असल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस आ जाता है, उसके बाद कंपनी कम से कम टेंशन फ्री हो जाती है कि जो भी आगे होगा वो प्रॉफिट में ही आएगा. और पेबैक पीरियड की कुछ ड्रॉबैक थे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस the second technique of non-discounting method, and that is known as accounting rate of return, ARR, which is also called as average rate of return, again ARR, which is also called as ROI, return on investment, and which can also be called as ROR, that is rate of return. So whether it is ARR, ROR or ROI, it is one same thing. Accounting rate of return, average rate of return, rate of return, or you can say return on investment. If you remember, we have also tried to differentiate between the concept of accounting profit and cash flow. Accounting profit is basically the amount of profit that we receive from the financial statement. जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, उसमें जो नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है, दैट प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट. लेकिन जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है. एंड एज यू आर अवेयर, द प्रोजेक्ट कैन रन ओवर नंबर ऑफ ईयर्स. और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में नंबर ऑफ इयर्स को भी कंसीडर किया जाता है, और ऊपर से जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या लॉसेज रिटर्न ऑफ हो गया, इन सब को भी प्रॉफिट निकलने के बाद एडजस्ट किया जाता है. एंड आफ्टर एडजस्टिंग द नॉन कैश एक्सपेंडिचर, देन वी कैलकुलेट the net cash flow. ARR is basically a very easy technique which do not involve any technicality. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. मतलब अगर आपको एकदम से किसी भी प्रपोजल का आउटकम चाहिए, इसको हम ले या न ले, तब हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए ARR को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका पॉजिटिव यही है that it is very easy and simple to calculate. दूसरी बात, ARR जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को कंसिडर नहीं करता. ARR will be based on a particular year itself. आप हर साल के प्रॉफिट को एड अप करिए, उनका एवरेज निकालिए, that can be said as the annual average profit of the year itself or the project itself. तो यहाँ पर जो टेक्निक है, मतलब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं. अब ड्रॉबैक्स में हम कहेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करता है. जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं करता है तो साथ ही साथ ये भी कहना होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं. ये हमारा नॉन डिस्काउंटिंग फिगर है. तीसरी बात, जो हमारे कंपनी की पॉलिसीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन पर बेस्ड होता है हमारा ARR, which can also be one of the drawback.
but ARR do not consider then what is the start and the end year. They just give, मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट हो या 50 साल का प्रोजेक्ट हो, इनसे नंबर ऑफ ईयर से मतलब नहीं है। ये हमको ये नहीं बताएंगे कि हमारा असल कब वापस हुआ, ये सिर्फ बताएंगे कि एनुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट। तो नंबर मतलब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट एज वेल एज पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड। क्योंकि अमाउंट चाहे कैश आउटफ्लो में ज्यादा हुआ हो और बीच बीच में इनफ्लो के साथ भी आउटफ्लो हो, तो बेसिकली दैट साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड। आपको सिर्फ सालाना ये मालूम पड़ जाएगा कितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट है और उसी परसेंटेज के बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे। एक और बेनिफिट ARR का है कि ARR बेसिकली अगर हमारे पास कुछ पिछले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं भी है, जैसे मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है पिछले 50 साल, तो सिंपल सी बात है कि 50 साल के प्रॉफिट को हम 50 से डिवाइड कर दें, हमको एवरेज निकल आएगा। लेकिन मान लीजिए पिछले 50 साल के डेटा में हमारे पास 4-5 साल का डेटा नहीं है, बीच बीच के 4-5 साल का डेटा नहीं है, मान लीजिए 45 साल का है बीच बीच में, कि 1950 से 2000 तक निकालना है, तो 50 साल हो गया, लेकिन 50 साल में हमारे पास 45 साल का है, तो सिंपल जितने भी साल का हमारे पास है उसको हम प्लस कर देंगे और 45 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक दैट वी कैन से, क्योंकि क्या रीजन थे जिनकी वजह से उस साल के प्रॉफिट हमको क्या पता, जो बीच के प्रॉफिट हमारे पास नहीं है या एनुअल रिटर्न नहीं है वो बहुत ज्यादा हो, तो जो आउटकम हमारा निकला दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। बट हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि ARR इज ऑलवेज द इजी टेक्निक वेयर इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कोई भी टेक्निकलिटी, कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जब कैश फ्लो की बात करते हैं तो हमारे पास एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो पूरा लॉजिकली समझ के और फिर आपको नेट कैश फ्लो लगाएगा और नेट कैश फ्लो के बाद डेटा को डिस्काउंट करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाएगा और तब आपके सामने जो कैश फ्लो निकलेगा मेरा उस पर आप डिसीजन लेते हो कि हमारा प्रॉफिट है कि एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। लेकिन एक छोटा व्यापारी जिसकी किराने की दुकान है या उससे भी छोटे जो उद्योग होते हैं, वहां पर बेसिकली जब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइजर्स को इन्वॉल्व करें, तो हमको खुद ही देखना पड़ता है। तो उस समय फॉर द स्मॉल बिजनेस दैट वी कैन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज द बेस्ट मेथड, बट इट इज बेस्ट along with certain drawbacks that we have discussed. Do not consider the cash flow, do not consider the time value of money, and moreover, and do not consider the size and the number of years for the project is going to run. इसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल है। अगर ARR निकालना है तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 साल का एनुअल फिगर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट में अपने आप ड्रॉबैक है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मान लीजिए हमारे पास 5 साल का एनुअल इनकम है, तो अगर हमको ARR निकालना है तो हम उन 5 साल के एनुअल इनकम को ऐड करेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया 0 ईयर में उस इन्वेस्टमेंट से उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। मतलब हम लोग इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब ये हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, या फिर कहिए बुक वैल्यू जो कि ओपनिंग हो गया प्लस आपका क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दैट यू कैन से एज यू विल गेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये आपको आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, सिंपल आपके सामने एनुअल दिया गया है
multiplied by 100 and the percentage you are able to get it. Along with the payback, ARR is also one of the technique which comes under the non-discounting techniques of capital budgeting. Now we take up a numerical and we try to understand how to calculate ARR. So we take up a numerical and with the help of that we try to calculate the payback period and rate of return, which can be said as average rate of return or accounting rate of return, ROR. Because this question will help us in calculating the return with the help of both the method of non-discounting techniques. Here you can see the capital investment has been done by the company is 2 lakhs. Depreciation is given as 20%. One thing more you should keep in mind. In ARR, we always apply straight line of depreciation. This is also one of the drawback. कि SLM को हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग ARR निकालते हैं. Depreciation is given as 20%. 5-year project, the annual data is given. The accounting profit is income is provided to us. First year 1 lakh, again 1 lakh, 80,000, 80,000 and 40,000. And we are supposed to calculate payback period as well as ROR. Investment is 2 lakhs. Investment is 2 lakh, and you can see in first year you are getting 1 lakh and second year you are getting 1 lakh. That means the investment amount is being recovered in the second year itself. So simple we can say that the payback period for this concept, for this problem is 2 years. Exactly. We can say that payback period is 2 years. Because we are able to recover our investment amount in 2 years. Now we have to calculate ROR. और ROR में हमको एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी दिया है. इसका मतलब हमको पहले डेप्रिसिएशन को हटाकर फिर जो एनुअल निकला है, that thing has to be calculated. Suppose we have here, okay, this is provided to us. What we can do? We can draw a line और यहाँ लिख देते हैं हम डेप्रिसिएशन. Depreciation is given as 20%. 20% of 2 lakhs. It comes to 40,000. So 40,000 will be the amount of depreciation in all the 5 years. 40,000. 40,000 in all the 5 years. Now, income after depreciation. Income after depreciation. Depreciation को भी टैक्स दिया नहीं है. अगर टैक्स नहीं दिया तो टैक्स हमको कंसीडर नहीं करना. अगर टैक्स दिया होता तो एक कॉलम और बनाते हम लोग और टैक्स भी कंसीडर करते हैं. मतलब इसके बाद एक टैक्स बन जाता और उसके बाद एनुअल प्रॉफिट निकलता हमारा. लेकिन टैक्स दिया नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं यहाँ पर. डेप्रिसिएशन 1 लाख में 40,000 गए तो इनकम आया 60,000. अगेन 60,000, 40,000. Again 40,000 and 0 and 0. What we can do? That how much we got? We got 2 lakhs. 2 lakhs as our income. The total is 2 lakhs. And ARR says that average annual income divided by average investment multiplied by 100. Average annual income divided by average investment multiplied by 100. So here you can say average annual income 2 lakh is the total income divided by 5. Divided by 5 years project is there. Because we have considered depreciation also.
अगर इस साल का प्रॉफिट हमको ना दिया होता तो हम 4 मानते, लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है तो we have to consider 50 also. It will come to as 40,000. So it will come to as 40,000. 40,000. That will be your average income. And average investment is 2 lakhs. Right? Average investment is 2 lakhs. So 40,000 divided by 2 lakh multiplied by 100. How much you got? 20%. Right? So we can say 40,000 divided by 2 lakh multiplied by 100, you will get as 20% as your ARR. Here the closing and opening was not given. The closing and opening was not given. Another concept to see. Here you have opening book value and closing book value. Book value means the investment amount. Initially और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, राइट? 1,20,000, 1,00,000, 1,80,000, 80, 60, 60, 40, 40, 20. आपको निकालना होगा इसमें एवरेज बुक वैल्यू. एवरेज बुक वैल्यू, एवरेज मींस इसको और इसको प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए. ओपनिंग बुक वैल्यू प्लस क्लोजिंग बुक वैल्यू divided by 2. It will be 2,20,000. Divided by 2, it will be 1,10,000. 1,10,000. 1,80,000. It will give you 90,000. 80 and 60. That will give you 1,40,000. That means 70,000. That will be 50,000. And here you have 30,000. You add up all the average. All the average that you add up. That means 110, 2 lakh, 2 lakh and 3,50,000. 3,50,000 will be your average book value. And this, if you, what you have to calculate? Average investment. इससे एवरेज इन्वेस्टमेंट ही निकलेगा, क्योंकि एवरेज बुक वैल्यू है ना. एवरेज इन्वेस्टमेंट 3,50,000 divided by 5. That will give you as 70,000 as your average investment. मतलब अगर यहाँ पर ये फिगर होता, एवरेज इन्वेस्टमेंट 2 लाख ना देकर इस तरह दिया होता, तो हम 70,000 को लेते डिनोमिनेटर. Right? In this problem only 2 lakh was given, we have considered. But I am saying this can be a problem, but this can also be incorporated in this. I have told you both the way, opening and closing average and dividend. This is one of the most easy method which comes under the non-discounting technique. Right? I hope this is a fresh problem we can take with respect to ARR itself. Another problem, as we have just now discussed, that accounting rate of return is basically one of the easiest method where no calculation with respect to past years or future years is required. Cash flow is not considered, time value is not considered. Only the average will be taken. Average annual profit divided by annual investment into 100. A machine costs ₹80,000. A company has purchased a machine for ₹80,000 and the machine is going to have a scrap value of 10,000. The life of the machine will be 5 years. And these are the incomes that we are able to get from the machine, but these incomes have been given as before depreciation. And 5-year income has been given. So first of all, we should know that what is the total income that we are receiving. That means total income before depreciation 60, 90, 105, 120.
That means 1,20,000 rupees. 1,20,000 is basically the annual income before depreciation. Right? So what you can say? Average 1,10,000. 40, 70, okay. 80, 85. 1,10,000. 1,10,000. So average income 1,10,000 divided by 5. How much? 22,000. That means average income 1,10,000 divided by 5. It gives you 22,000. Now, amount of depreciation. We can say what is the amount of depreciation. In depreciation, you can see investment is 80,000. We are getting a scrap of 10,000. That means total value is 70,000. Total value is 70,000. That means 70,000 has been recovered through depreciation. So total we can say as average depreciation will be 70,000 divided by 5. That comes to 14,000. This was your average income before depreciation, and this is your depreciation annually. Now, we can say as total income after depreciation. Total income after depreciation, which is coming as 22 minus 14,000. It comes to 8,000. Which comes to 8,000. Now, average income of this 8,000 divided by, this is 8,000 only. You can say, you must say that average income is this only, because depreciation, this is average income and this is average depreciation. So this becomes the average income after depreciation only. That means no need, you can say it is not the total income, but it is your average income after depreciation comes to as 8,000. Right? Now, so average income after depreciation comes to as 8,000. Now, for calculating ARR, the equation says average annual income divided by average investment multiplied by 100. This average annual income is given as 8,000. ये तो आपको भी 8,000 निकल गया, लेकिन जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है तो 80,000 प्लस जो क्लोजिंग था 10,000, 80 plus 10, that makes 90. 90 divided by 2, that comes to as 45,000. Because 80,000 plus 10,000 divided by 2, it comes to as 45,000 and multiplied by 100. Right? So 8,000 divided by 45,000 multiplied by 100. It must be somewhere 17 point something. 17.77. 17.77.